everyone, वापस आ गए एंड हम लोग LGBTQI कम्युनिटी में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वेयर लिटरेचर एंड क्वेयर राइट्स। सो इसलिए हमारे पैनलिस्ट जो है कम्युनिटी से हैं एंड मेरा पहला क्वेश्चन किंशुक के लिए है, एज एन ऑथर व्हाट मोटिवेट्स यू, क्योंकि हर ऑथर की अपनी एक स्टोरी रहती है, तो एज अ क्वेयर ऑथर व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट कम्युनिटी इश्यूज एंड आल्सो ऑन पोएट्री, क्योंकि आपकी काफ़ी किताबें आ चुकी हैं। Um, why does anyone write? I think one writes because they are not able to see the word the way they want to see the word. Any good writing comes from a place of not belonging. When you don't belong to somewhere, you want to belong so hard that you write. In writing, there is a refusal of not being what the society wants you to be. And so I think I write. Um, when we talk about queer literature, we kind of always talk about a certain subset of characters, perhaps, um, ignoring the wide spectrum of social, political, economic disparities that they exist in. And that is when I think that queer literature also becomes what any other piece of literature is, except that it has characters who have a very different way of looking at world. Um, Yesterday, I think, Indian Express published an editorial about this Palestinian writer who's ready to give away his entire collection of books for a sack of flour. Um, and when we are writing, we must be aware of the kind of world that we are living in. And I think what queer literature has helped me to do is to think about this larger world in ways that perhaps a heterosexual writer would not have been able to. I think I also write because language, as far as it becomes a mode of expression, it's also a way to perhaps block the way I think, the way I want to exist, or the way I want my characters to exist. Writing in Hindi about queer characters has been very difficult because you don't have the language. Language betrays you every time you want to talk about this disruption of desires. And that is why I write and I write in Hindi because I want to experiment with language and more so Hindi language, which is quite homophobic in the sense that there aren't many queer books, writers, or a sense of community. So, yeah, I think those are the reasons that I write. This is also something I want to add because मेरी जो बुक है मैनेज ऑफ कन्वीनियंस, जब वो ट्रांसलेट हो रही थी और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ट्रांसलेट करने वाले ऑथर जो है निकिता एम बैठे हैं। सो निकिता इज अ हिंदी ऑथर, तो जब वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे तो ये एक्चुअली कैरेक्टर्स के बारे में वर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों को ऐसे वर्ड्स की भी ज़रूरत है और जितना हिंदी में लिटरेचर आएगा उतना एक्सेसिबल होगा, और किंशुक मेनली हिंदी में लिखते हैं, तो थैंक यू फॉर योर वर्क। एंड राहुल, आई एम गोइंग टू आस्क अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन टू यू, मतलब इट्स बोरिंग फॉर अस बट नॉट फॉर द ऑडियंस।
How would you describe the current state of queer rights in India? And what are the biggest wins and challenges in the recent years for our community? Hi everyone, a very good evening. Um, I feel like हम एक कदम आगे जा रहे हैं, चार कदम पीछे जा रहे हैं when it comes to queer rights, and not specifically in India, but throughout the across the continents. And I'll give you certain examples. So if you asked about the wins, let me just start with wins. I think, and three of us would agree, one of the biggest wins would be decriminalization of homosexuality, right? Back in 2018. Um, then comes उससे पहले 2014 में there was NALSA judgment. 2019 में then came the Transgender Person Protection of Rights Act, right? These have been some really big wins. जैसे नालसा जजमेंट है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होगा, अब थर्ड जेंडर भी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये सेल्फ, दिस ऑल्सो गिव्स यू द राइट टू सेल्फ डिटरमाइन, सेल्फ आइडेंटिफाई, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विंस। हमको हमको जरूरत नहीं है कि वी हैव टू गो अंडर द नाइफ, वी हैव टू हैव सर्जरी, राइट? This is our identity, and this is what the Supreme Court had affirmed. So that's for me, that's one of the biggest wins. Another thing is, I think recently, पिछले हफ्ते शायद आया था, about the chosen family, right? They affirmed that traditional families हमेशा शायद साथ नहीं देंगे, then this concept of chosen family has to be legitimate, right? उसके पहले आई थिंक मद्रास हाई कोर्ट ने 22 या 23 में ये जजमेंट दिया था, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वंडरफुल जजमेंट्स, एंड दैट केम एक्चुअली आफ्टर a couple filed a PIL, a lesbian couple filed a PIL in the court. One of the judgments was it made mandatory for the schools to have PTMs and have discussions on LGBTQ issues in those PTMs. कितना execute हो रहा है, कितना implement हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। बट दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट विंस, बिकॉज इन सब के साथ वी आर कमिंग इन टू द पिक्चर, राइट? डिस्कशंस हो रहे हैं। एज आई सेड, हम एक कदम आगे जा रहे हैं, चार कदम पीछे जा रहे हैं। हमने सेक्शन 377 का बात किया, हो गया। अभी आई थिंक 2024 में हमारी जो प्रिय गवर्नमेंट है वो लेके आई BNS, भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 377 एटलीस्ट it gave some legal protection against for all those victims, male victims of rape, right? लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। It specifically says कि फीमेल विक्टिम्स ऑफ रेप, सो वो जो DNS है वो मेल पे लागू होता ही नहीं है। एंड दे हैव बीन नंबर ऑफ केसेस वेयर queer individuals have been sexually abused, assaulted, अब उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, लॉ उसमें आता ही नहीं है। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक्स। देन मैरिज इक्वालिटी, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? 2025 में फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, राइट? सो दे हैव बीन अ नंबर ऑफ सेटबैक्स which again makes us feel like हम एक कदम आगे चल रहे हैं लेकिन चार कदम पीछे चल रहे हैं. This is just in India. But if we see otherwise across the continents, see what is happening. पिछले 5-6 महीने में, जनवरी से लेकर अभी तक US में क्या हुआ है. And if you see, US is the example, UK is the example, हंगरी इज द एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, जहां पर उन्होंने प्राइड इवेंट्स ही बैन कर दिए हैं, पीनलाइज कर दिया है. इमेजिन हम लोग अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं क्वेयर राइट्स पर, इसके लिए मुझे पेनल्टी लग सकता है, और सिर्फ मुझे नहीं, आप लोगों को भी लग सकता है क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं. दिस हैज बीन पेनलाइज्ड इन हंगरी, राइट? टर्की है वहां पर. एंड इफ यू सी द पैटर्न, दीज आर नॉट आइसोलेटेड इवेंट्स. दिस इज लाइक रिपल इफेक्ट होता है ना, ये वो है. Right? These are not isolated events, and if you see the pattern is all of these things जो भी हो रही हैं, they are targeting specifically the trans community. Trans community, and I think both of you would agree, has been the most visible, the most outspoken,
yet the most marginalized and stigmatized community, and उनके ऊपर और ज़्यादा अटैक हो रहा है. So globally if we see, I think हम 4 कदम नहीं 50 कदम और पीछे जा रहे हैं. So this is the scenario with respect to queer rights in India and otherwise. थैंक यू सेम विद किंशुक, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाउ हैज क्वेयर लिटरेचर शेप्ड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कोर्स ऑन क्वेयर राइट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो ग्लोबली? क्योंकि मेरे साथ होता है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस को कई बार लोग स्मर्ट समझ के भी पढ़ने लग गए थे, तो उसके बाद मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि हमने पढ़ा, फिर हमें समझ आया कि नहीं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है, होमोफोबिया के बारे में है, और हमें पता चला कि ऐसे केसेस भी होते हैं. सो मेरी बुक है लेवेंडर मैरिज के बारे में, मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, एंड आप भी कम्युनिटी के बारे में लिखते हो, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आके बोला हो, या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, आपको लग रहा हो कि कोई लिटरेचर से पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी की बढ़ती है? Too niche. Queer literature is too niche a space. When publishers publish you, I remember, when the translation of my book happened, it went to Penguin, and Penguin's editor was quite happy to publish the book, but the book got canned in marketing because they said, we've published this one book which is like translated from Hindi, so we're not going to publish second book, in the same year. So that's very exciting. There is a lot of receptivity amongst publishers, amongst readers when it comes to queer literature. But just as this progressive stance, just as this tokenistic enterprise, but it does not translate into anything substantial, you know. That's one. Um, you know, if you talk about Hindi, the situation is pretty much the same. Um, but there have been these very few incidents that happened to me after the book got released. And one of the things that I dearly, dearly remember, and I think that that's the only thing that will sort of survive for me eventually, is this phone call which one of my stories had published in Hans. Hans is it's one of the oldest magazines of Hindi literature, started by Kinshuk, and then Rajendra Yadav took over, and it was known to publish this kind of transgressive literature. Um, so this man from Jaipur called me. He told me that I'm 60 years old, and I live alone. I married and I had a son. I had two daughters and I had a wife. And now this wife has died, and he read the story and he told me that this is the desire that I've felt for these 60 years, but I could never express it. And he told me that he had this bisexual partner right back in the college, and of course that time it got penalized. Once the ban got removed, and then it again got penalized, and then this bisexual man went away and married a woman. And he told me that still he has that desire, even though he's become so old, and he even feel embarrassed that he has that kind of desire. But he still has that kind of desire, and it still hasn't died. Yeah, so that's one thing that happened, and there were so many of these younger queer people. You know, what happens eventually is, and Vasudhendra talks about it in his one of his talks. He says that there are so many people in hinterlands who are queer and who are also aware, and because of technology, because of these apps, one can interact with people from the community, but you don't have the language. You if there is somebody who knows only Hindi or Kannada or Tamil, how do you talk to anybody who's
who's supposedly staying in Delhi, who only understands English. So I think those are the challenges that regional literature has to really understand. And I think it also comes down to the readers. Reading Hindi or reading any regional language is not considered any good thing. In fact, it is scoffed at. It is seen with an eye of derision. And I think that's where the problem also lies, because we have we've got this idea of queerness from Europe or from the West, and we are creating like a replica of that instead of accepting or perhaps mining what was there in our culture and our language. And that there have been fabulous ways of digression in our culture. There are so many of these cultural things that defied all the notions of categories and labels and all of that. So I think it also comes down to that and understanding all of that and embracing it rather than just leaving it. So Thank you, that was insightful. And Rahul, this is my question to both of you. How can families become safer and more supportive spaces for queer people and Kinshuk? So, because I think you have been to many countries and you have met a lot of people. So, how can families? Because I see a lot of parents sitting here, including my parents, one of my parents, and I also see future parents sitting here. So, how can the families be more comfortable space, safer space for queer people? By future parent, do you mean me? No. No, like other people. So, um, Most of the people. How many of you are straight? स्ट्रेट कौन कौन है उसमें भी झिझक उसमें भी चीजें हैं हम स्ट्रेट एलजीबीटी से कौन नहीं है हाँ उसको स्ट्रेट कहते हैं सो बच्चे बच्चे करेंगे आप लोग आपने सोचा है ये जेंजी ने तो बस छोड़ दिया है मेरी मम्मी भी बैठी है तो नहीं मम्मी को तो पता है क्या हाउ कैन फैमिलीज बिकम सेफर एंड मोर सपोर्टिव स्पेस फॉर पीपल तो भाई बहन भी तो हो सकते हैं तुम्हारे एलजीबीटी कजन हो गए तो भांजा भाजी कोई भी हो सकता है so I think I'll answer this by saying by asking a question rather. मेघना फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में हैं ठीक है एंड आई एम कॉलिंग यू ओवर द कॉल आपके चाचा मामा चाची मामी ताई ताया ठीक है सब शादी में है एंड देन गॉसिप चल रहा है ये खाना ठीक नहीं है ऑल ऑफ दिस थिंग बीच में मैं कॉल कर रहा हूँ आपका देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट आई रियली नीड टू टॉक टू यू सो आप क्या उन्हीं के बीच में बैठ के बात करेंगे और you'll come aside and then talk to me and यार मेरे रिश्तेदार टॉक्सिक है सॉरी मम्मी no, a very generic situation. मम्मी कह रहे कर लो तो टॉक्सिक है बट हाँ यूजुअली व्हाट आई विल डू इज कि मैं साइड में जाके बात करूँगी बिकॉज़ दे आर वेरी होमोफोबिक Right. एंड बट हाँ मेरे फादर को मैंने बहुत ट्रेन किया वो होमोफोबिक ट्रांसफोबिक ना रहे क्योंकि कम्युनिटी में काम कम्युनिटी के लोग घर भी आते हैं तो कई बार मैं उनको लेक्चर भी दे चुकी हूँ तो अब ऐसा हो गया कि पापा खुद कहते हैं अच्छा वो बच्चा ये है चलो मैं खाना बनवा देता हूँ खा लेगा अच्छा घर से निकाल देंगे कोई काम ही नहीं हमारे लोगों को छोड़ना तो सेंसिटाइज करना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस Yeah. So, and I just given a scenario, and not just specifically. I wanted to talk to Meghna about LGBTQ issues. It could have been anything. Let's say मेरा एक job लगा and I really wanted her advice. Okay, anything. The bottom line is I really wanted to talk to her something important. So obviously, and as you should also be doing, आप side में जाके बात करेंगे because आपके आसपास noise है बहुत. And when I say the noise, those relatives, those society, they are noise. So the first thing I think that every parent has to do, must do, is when their child is reaching out to them,
लिसन टू देम, अपने आसपास की नॉइज को थोड़ा बंद करें, शट डाउन करें एंड लिसन टू देम पेशेंटली, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, a number of practice sessions, many years, कि एक बच्चे को एक अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना है कि मैं क्वेयर हूँ, मैं गे हूँ, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। दोस्तों के साथ हम आसानी से बात कर लेते हैं, बट पेरेंट्स के साथ बात करना उतना ही मुश्किल होता है। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स शुड डू इज लिसन टू देम पेशेंटली। झाड़ू मत उठाइए, चप्पल मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, जस्ट लिसन टू देम, हेयर देम आउट, राइट, एंड शट डाउन ऑल द नॉइसेस। नॉइसेस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं पूरे खानदान को, जैसे बुला के मीटिंग होती है कि हमारा बच्चा गे निकल गया है, वो नहीं जरूरी है, पहले अपने बच्चे की बात सुनेगा। Right. Ultimately, it's your family, your children, and you, right? Second thing is, and this has to happen at different levels, sensitization and a parent's resource growth. एंड आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का और हमारा जो जनरेशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, नॉट जस्ट एज वाइज, बट दे हैवंट सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव सीन, राइट, एंड वी वुडंट बी सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नेक्स्ट जनरेशन वुड बी सीइंग। सो ये जो गैप है उनके लिए समझना उतना ही मुश्किल है। सो देयर हैज़ टू बी सम पेरेंट्स रिसोर्स ग्रो जो उनको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड what their child is going through, to understand all this spectrum of LGBTQIA plus, right, and make them understand this is normal, this is natural, and help them how to accept their child. So here I would like to take the liberty and quote that our organization back in Gandhinagar, so we have a parent support group, it's called Kutum, and it's rather a family support group. So these families, mainly यहाँ पर parents ही हैं, they meet every month. उनमें से कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने ओपन हार्टली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ हैं दे आर ऑन देयर जर्नी, सो दे काउंसल ईच अदर। वी ऑल्सो हैव काउंसलर, अ प्रोफेशनल काउंसलर हु हेल्प्स देम आउट एंड एवरीथिंग। देन जो पैन इंडिया लेवल पर एक और ग्रुप है, स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स, they are also doing a similar thing. They are in fact the first in the country, right? We need to have more and more such parent support group, because एक बार, and as they say, once a child comes out to their parents, but फिर जो parents होते हैं वो closet में चले जाते हैं, because they have absolutely no idea how to react, what to say, what not to say, right? So there has to be some support group. And third thing I think, which I said in the beginning, was this through these PTMs, right? Because पेरेंट्स के लिए स्कूलिंग वहीं से हो सकता है, एज द हाई कोर्ट सेड एंड मेड इट अ मैंडेट that whenever they are having PTMs, primarily I think every month or once in 2 months, they need to have this discussion also, because it's really important. And most importantly, आप नहीं हैं queer, well, आप unlucky हैं because being queer is really fabulous, but at the same time anybody around you could be queer. Anybody around you could be looking out for a safe space for somebody whom they can reach out to, right? Be that somebody. Just hear them out if they are reaching out to you, right? So these are, I think, some of the things that families can do to make themselves as a safe space for people. Because when I say safe space, it's not the physical space, right? It's the people. लोग अगर समझदार होंगे, सुनेंगे, that ultimately becomes a safe space. मेरा जो इसमें आपने ऐड ऑन करना है, नहीं, इसका एक भाई बहन क्वेश्चन है लास्ट जो आप दोनों को मिलके आंसर करना है कि व्हाट कैन एलाइज डू टू सपोर्ट क्वेयर लिटरेचर एंड क्वेयर राइट्स इन इंडिया। बट पहले फैमिली पे आते हैं, फिर You know, I think what queer literature has also helped me to do. I would borrow from him. He says being queer is so nice. It is nice because it allows you to question. So, one should ask these questions from themselves. What does a family mean? You're calling somebody as parents only because they came in this world
20 years earlier to you? Is that so? And if that is so, then why are we, imputing certain ideas to a particular role? Which also narrows down to how, we understand who is a man, who is a woman, what is a family, what is a child, what is a parent. And until we come to that position to question these basic ideas, we can't reach to any amount of acceptance. I mean, when a child comes out as queer, eventually parents accept it. But I mean, I don't think that acceptance comes from a place of, from a place of perhaps, for the lack of better word, love. It comes from this place of, perhaps surrender to the situation. I don't know, when people call themselves as allies, does that really mean any empathetic connection? Or is it just, that you want to put something on social media or call yourself as something, or, have that label on your sleeve? That's why you call yourself as an ally. Because, it's, and literature is that window. I think literature is the only window. Um, Early in the morning, I saw this child in Palestine who had this Spider-Man cape, and he was running through the street. And I thought that, it must have been so hard to live, and then even in those dire circumstances to hope and to imagine an alternative reality. And I think literature is this. Literature allows you to hope, and literature also allows you to see different kinds of people who perhaps might be extremely different. And it might be a serial killer, it might be a prison inmate, or it might be a queer person, anybody. When you see them doing what, you might not be doing in a particular situation, then something happens in you. That is the power of literature. And I think for anybody and everybody, not just for allies, it's important to read literature for that matter. The kind of world we're living in, which is predominated by AI, by, all these capitalist notions of identity, what we're really doing is making ourselves as Instagram memes. We've just become these very flatlined ideas of ourselves. We don't have depth and breadth. We've lost that. And I think literature is that window to allow that nuance. And it's only in that nuance that any kind of acceptance can also happen. So I think, just to say it, perhaps reading more is the only way of, perhaps understanding, reading more, talking more, discussing, debating. There was this very interesting thing that happened. Our college had this queer sensitization program, and then one of these students came up to the facilitators. I was standing. She's a doctor. She asked him, um, ये सिग्नल पर जो ट्रांस लोग खड़े होके भीख मांगते हैं, आप उनको नहीं दो तो वो आपको 10 तरीके की बातें बोलते हैं। आप हमसे तो ये उम्मीद करते हो कि जब वो हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए तो हम सिंपैथेटिक हों, हम उनकी बात सुने, बट व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड आवर privacy? And I don't know how would anybody of you be able to answer that question without understanding the kind of marginalization that somebody has to go through.
the anger that marginalized, that only literature can do. So I think to sort of say it in a roundabout way, I think talking about rights is extremely important, but they can only be done in a way that people engage with them. And that engagement cannot happen only through social media, which seems to be the default way of interaction these days. It has to be public spaces, it has to be literature, it has to be a very, very serious engagement, and that I think can perhaps bring change. Everybody should read, and not only read, the famous queer books, read all kinds of books from small presses, from regional presses. You'll find very interesting literature, very interesting conversations happening in them. So I think that's what I want to say. Rahul, do you have something to add? A lot. um, I think so. I'll give you one instance. So, Kinshuk was talking about this incident during this gender sensitization session. So, जून में मोस्टली जब ये सारे कॉर्पोरेट्स जागते हैं एक महीने के लिए लोग अपना रेनबो रेनबो कर देते हैं. So one of these corporates and a very big company, right? They they called me for a gender sensitization session for their employees, and there were like 65 people on that call. It was a virtual session, and so I was supposed to tell them about the current scenario as far as the queer rights are concerned, and internationally in India and internationally. And then they were so discussion चल रहा था ये सारा कुछ, and then there was this message and time भी over होने वाला था, right? And there was this message in the chat box which says but Pride month जून में ही क्यों होता है, right? And it's a very, very important question. Now the thing is, as I was about to answer that question, so there was this person saying we are running over time. I was like, excuse me, one of your employees, and at least she gathered the courage to ask this question. हो सकता है बाकी लोगों को भी नहीं पता हो. You're hosting this session in the Pride Month to sensitize people, and your people don't even know why Pride Month is celebrated in June or why June is the Pride Month. And if somebody that you have called is trying to answer that question, and I would rather say the most important question, right? One of the most important questions. This is just not done, and then I had to tell them the entire history why June is the Pride month and not July or August or February, right? So this is where I'll start with ignorance. I think discrimination से ज़्यादा ignorance है यहाँ पर. People just ignore. हमारे I think why June? Oh, no, you're not. You're curious. You are curious. There's a difference between ignorance and curious. You're very curious, and thank you for asking this question. So, why June? Well, it all started back in June 1969. US में न्यूयॉर्क सिटी में एक बार है, स्टोनवॉल इन. वो एक ऐसा बार था जहाँ पर क्वियर लोग, ट्रांस लोग काफी जाते थे. वो एक सेफ स्पेस बन गया था. इतना भी सेफ नहीं, बट वही एक जगह बन गया था. उस एरिया का नाम था ग्रीनिच विलेज. बट वहां पर भी पुलिस की रेड्स बहुत आम बात थी. नाउ एक रात को 28 जून को वहां पर पुलिस रेड हुआ. उस दिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि चीजें चेंज होने लगी. नाउ दैट नाइट पीपल फॉट बैक, राइट? क्वियर लोगों ने कहा, ट्रांस लोगों ने कहा कि बस हुआ, इनफ इज इनफ. बोतलें तोड़ी, पत्थरबाजी हुई वहां पर. एंड वो पहली बार था जहां पर पुलिस को वहां से भगाया गया, राइट? एंड ये एक रात का नहीं था, ये करीब 4, 5, 6 रात चला ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरे प्रोटेस्ट. और ये जो पूरा सीरीज है प्रोटेस्ट का, उसको कहते हैं स्टोनवॉल अपराइजिंग. उसको यू वेलकम. उसको सेलिब्रेट करने के लिए नेक्स्ट ईयर जून 1970 में पहला प्राइड मार्च हुआ. तो वहां से जून जो है वो पूरा महीना क्वियर लिबरेशन, क्वियर राइट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, देन इट बिकेम द प्राइड मंथ. बट अगर हम इंडिया की बात करें, इट शुड बी जुलाई, आई गेस.
बिकॉज इंडिया में जो पहला प्राइड मार्च था वो जुलाई 2 1999, एंड वो बाय द वे वो सिर्फ इंडिया का नहीं, वो पूरे साउथ एशिया का सबसे पहला प्राइड था, कोलकाता, राइट। सो इग्नोरेंस इतना ज्यादा है बिकॉज हमारे दादा दादी इन सभी को पता है शिखंडी की कहानी, इन सभी को पता है भागीरथ की कहानी, इन सभी को पता है बृहनला और कितने ही ऐसे क्वेयर इंस्टेंसेस, येट उन्होंने कभी नहीं बताया होगा कि शिखंडी शिखंडी कौन है, राइट। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। कोई क्वेश्चन भी पूछा होगा किन्नर कौन है, शायद नहीं बताया होगा, सिर्फ इतना कह दिया होगा जो बधाई मांगने आते हैं वो, राइट, और इनसे ज्यादा बात मत करो, ये सारा कुछ। सो इग्नोरेंस इतना ज्यादा है कि कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है। सो आई थिंक वहां से हमें शुरू करना होगा। थोड़ा सा हमें टॉलरेंट होके, वी नीड टू बी टॉलरेंट इनफ सो दैट इफ समबडी इज आस्किंग अस क्वेश्चन, उनको डांटना नहीं है, आंसर देम, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देम, जस्ट गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, राइट। सो दैट इज थिंग। allies का if we talk about allies are basically friends, ठीक है। all of us, we need friends, we are social human beings, we are social animals, we need friends, we need relations. Now हम जब friends बनाते हैं, we don't make friends by saying by considering somebody's gender identity or sexual orientation और बैंक बैलेंस, मे बी समटाइम्स बैंक बैलेंस, ठीक है, बट सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो पता ही नहीं होता, वो तो जब सामने वाला बताता है तब पता लगता है, राइट। सेम विद द जेंडर आइडेंटिटी, वी मेक फ्रेंड्स बिकॉज वी वाइब विद देम। अब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो सकता है, नोटोरियस लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, बिकॉज वी वाइब विद देम, अगेन जेंजी लैंग्वेज वाइब, राइट। नाउ द मोमेंट दिस पर्सन सेज आई थिंक आई नीड टू टेल यू समथिंग, आई एम गे, या तो आप उसको शू अवे कर देते हो, या फिर कहते हो ओह ओके आई कंप्लीटली सपोर्ट यू, बट तू मुझ पे लाइन तो नहीं मारेगा ना, हेलो एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट इवन माय टाइप, राइट। सो दिस इज नॉट बीइंग एन अलाय। आपका सपोर्ट कंडीशनल नहीं हो सकता। इफ योर सपोर्ट इज कंडीशनल, आई एम सॉरी, यू आर नॉट एन अलाय। If your support is just limited to attending pride parades, no, you're not being an ally. You're doing it just for the social media. And unfortunately, as Kinshuk said very rightly, social media जो बन गया है ना knowledge gain करने का, by the way, जितना ज़्यादा वहाँ पर information है, उससे दुगना 3 गुना ज़्यादा misinformation है. That too, some of those misinformation is from the community itself, right? And ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हैं, please. We are also human beings. हमारे में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं. So even some queer individuals, they are also spreading misinformation. So I think it's very important to read authenticated literature. It's even more important to know the lived experiences. जब तक lived experiences आपको नहीं समझ आएंगे ना, आप नहीं सुनेंगे. अगर मैं एक cisgender इंसान हूँ, मैं नहीं बोल सकता किसी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल का lived experiences क्या होगा, क्योंकि मैं झेला ही नहीं हुआ, मैं नहीं बोल सकता। आई कैन बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट आई कांट से ओ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, नो आई कांट अंडरस्टैंड, मेरे को नहीं पता ट्रांस होना क्या होता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू इनकलकेट टू बी एन अलाय, टू सपोर्ट द कॉज एंड नॉट जस्ट द इंडिविजुअल। अगेन, टू बी एन अलाय डजंट मीन दैट मैं अपने फ्रेंड को तो सपोर्ट करूंगा बट दूसरा बाहर में जाए, नो, देन यू आर नॉट सपोर्टिंग द कॉज। द कॉज इज human rights for everyone. Love cannot be wrong, period.